यस, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स? नंबर 1 बोलो की है बाइंडिंग एनर्जी per nucleon. Before that they write how many, including all the isotopes, how many elements are there? कितने लिखे हुए approximately? No, no, 2500 including isotopes. How many of them are stable? 280. Approximately 10% are stable. So there are reasons for stability. Binding energy per nucleon. All of you have seen a graph. Maximum for iron. So for this area, binding energy per nucleon is less. That is why they have tendency to break into pieces smaller. उस process ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Fission. In this area, binding energy per nucleon is less. They combine together to form relatively bigger nuclei, and they want to attain stability. So, if binding energy per nucleon is more, stability is high. Correct? कर लो नोट, बना लो ग्राफ, 2 मिनट का टाइम. बुक च आर्टिकल नंबर 14 जो लेट आया है, खोल के रखो आर्टिकल नंबर 14 बुक. Point number 1 we have discussed is already known to you. Binding energy per nucleon, if it is high, it is more stable. ग्राफ बनाया सीगा. This was binding energy per nucleon. This was your mass number. Second बोलो की है. You have number of objective question. Point number 2. Yes. Now let us work out with the reason. Neutron proton ratio. Question is, on y-axis बोलो number of neutrons. On z-axis, sorry, x-axis number of protons. Say z. Neutrons, and here number of protons. If number of neutrons are equal to number of protons, if, then all the points will lie on this line inclined at 45 degree. If number of protons and neutrons are equal, एक कड़ी लाइन है, इक्वेशन की है बोलो, y is equal to x, y is equal to x, dy by dx is equal to 1, dy by dx का मतलब क्या है? Slope, slope is equal to 1. But if you plot the graph, we can try. Helium nucleus, बोलो number of protons बोलो कितने हैं? बोलो 2, neutrons 2.
So 2 protons and 2 neutrons. The number of protons is equal to number of neutrons. This point lies on the graph. Sodium, eleven protons, न्यूट्रॉन्स, बोलो ये लाई करेगा. दिस पॉइंट डेविएट्स. प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स मोर, दैट मीन्स इस लाइन तो शिफ्ट कर देगा. यूरेनियम, से यूरेनियम 235, 236, 238, योर चॉइस. 92, तो बहुत ज्यादा हो गया. दैट मीन्स एज द साइज इंक्रीजेस दिस ग्राफ शिफ्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, दिस n इज इक्वल टू z लाइन, तो इस तरह शिफ्ट करता है. इतने मिनट बेटा पीछे पीछे ये शिफ्ट कर देगा. जो लेट आया क्वेश्चन सुन लो. इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, हीलियम न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, प्लॉट किया लाइन पे आ गया. सोडियम 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स 12, शिफ्ट कर गया. द क्वेश्चन इज व्हाई it is not a straight line, why the element deviate, why they lie on a graph, on this blue graph, not on black. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ. as the size increases, why the number of neutrons is more than number of protons. 1 2 ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ. as the size increases, neutron to proton ratio becomes more than 1, and this ratio keeps on increasing with the size. Why? Competition the question, y is equal to x line te lie karda hai ki nahi lie karda hai, helium lie karda hai ki nahi, sodium lies or not, such questions. Number of questions सारे ਦਾ आंसर ਆਊਗਾ. ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਨਾ ਹੈ? 2. ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਬੁੱਕ 8b/14 ਕਰੋ. पढ़न तो बाद रीजन दो मैनू वाई इट इज सो. हीलियम च प्रोटॉन्स कितने हैं? 2. न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2. So this point lies on the line. Kedi line? Neutron is equal to proton. Y is equal to x. But sodium, neutrons 12. Uranium 235 minus 92. As the size increases, why neutrons are more than protons? पढ़ो क्वेश्चन ਇਹਦਾ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ देखो, देख के ਮੈਨੂੰ आंसर दस. सिंपल. Anyone with the answer, please? इधर कोई नहीं है? किसी में समझ लग गया? यस, करो ट्राई बेटा. चलो कोई गल. यस, थोड़ा जिहा एक पैरामीटर ऐड करते हैं. ठीक है, साइज जरूर मेंशन करना है. स्मॉल साइज. सपोज देयर आर 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन, they have attraction also, they have a repulsion also. Nuclear attractive force is very large in comparison to repulsive force. For a large nuclei, again nuclear force is more in comparison to repulsive force, but because the distance has increased, nuclear force is short range force. Decrease in nuclear force is much more in comparison to decrease in electric force. That is why you will have to add something
which has only attractive effect, not repulsive. बोलो किहड़ा पार्टिकल है जिहदे करके न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स आ जाए, repulsive ना आवे. That means what? Neutron. So you will have to add more neutrons because they cause only attractive force, not repulsive. That is why when the size increases, this distance r changes to r dash. Nuclear force decreases very sharply when the distance increases because it is characteristic बोलोगी ये था short range force. That is why it decreases. So nuclear force decreases, say becomes 1 by 100. This repulsive force will also decrease. Proton electric force is repulsive. That will also decrease, but not to that extent. So in order to keep it together, you will have to add some particles. Those are only की cause की है only, they will lead to only attractive force. केड़ा पाइए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन. लिख लो, 2 मिनट का टाइम. टू मिनट्स. Objectives for most of the elements or nuclei, n by z is greater than 1. For helium it is equal to 1. So n by z is greater than equal to 1 except hydrogen. Yes, hydrogen protons कितने हैं? 1. न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0. So हाइड्रोजन छाड़ दो, दैट टू एक आइसोटोप बेसिक. ड्यूट्रॉन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं. So that means only for 1 n by z. That means for all you can say, except only exception is hydrogen. For others n by z is greater than equal to 1. Third point बोलोगी है stability, combination, even. Even number of protons and even number of neutrons. Even combination is most stable. किदी एग्जाम्पल देंगे हैं केमिस्ट्री च, फील्ड ऑर्बिट्स 1s2 2s2 2p6 इनर्ट गैसेस एंड ते आ गए, उन्होंने स्टेबिलिटी की है ज़्यादा. सिमिलरली न्यूक्लियर लेवल आर ऑल्सो फिल्ड. इन्हें फिल करते हैं बट सिलेबस नहीं है.
कि 1s2 2s2 2p6 ये फिल करना विद इन द न्यूक्लियॉन्स भी है फिनोमेना है, बट इन +2 even introduction to this part is not there, but the result is even is most stable. How many? Table पढ़ के दसना है बस. 165 stable. Even odd 50 57 nuclei. Odd so arrange the following in order. तो एक choice है. Even nuclei is more stable than even odd is more stable than odd. लिख लो बस ऑब्जेक्टिव से पूछेंगे 2 क्वेश्चन आंसर दे देना.